All right, so we've been taking stock of the ground realities, speaking to people, trying to find out what are the kind of experiences that they are going through while struggling to secure treatment for COVID-19. Mirna investigation has exposed how ambulances in Maharashtra's worst hit COVID cities are literally exploiting patients. Private hospital services are charging 2 to 3 times the capped price. There is a price that has already been announced for ambulance services, but private ambulance services are flouting the norms and overcharging patients. According to the government order, private hospitals are supposed to charge 1190 rupees for 25 kilometers, and beyond that they are supposed to charge 25 rupees per kilometer. However, Mirna Santhia Gora dialed an ambulance service across 7 cities, and she found that there was no one willing to provide an ambulance for anything less than 1500, which is anyway above the capped price. Listening. क्या है सर, प्राइजेस कितना रहेगा सर? मैम 5000। 5000? यस मैम। सर वो थोड़ा कैपिंग है ना गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैम अभी आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? सर मेरे हिसाब की बात नहीं है, मतलब अब गवर्नमेंट ने तो बोला हुआ है कि मतलब 25 किलोमीटर का 1200 रुपए ही बोला हुआ है। कितने किलोमीटर का? 12 किलोमीटर का बताएंगे 1200 रुपए। सर 25 किलोमीटर का सर गवर्नमेंट का आदेश बताइए, आप 25 किलोमीटर का अभी गवर्नमेंट ऑक्सीजन दे रही है क्या? एक टाइम था कि मैं आपको दे सकता था जी, लेकिन अभी ऑक्सीजन भी तो महंगा है मैम। ठीक है सर, मैं आपको बताती हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ, 4000 में मैं लास्ट कर दूंगा। सर मुझे में एक एम्बुलेंस चाहिए थी, ऑक्सीजन एम्बुलेंस मिल जाएगी क्या सर? हाँ मिलेगा। कहाँ जाने का है? सर शिवाजी नगर से ससून जाना है सर। ठीक है, चलेगा ना मैम। सर प्राइस कितना है सर? ऑक्सीजन एम्बुलेंस चाहिए होगी। 3000। 3000? हो सर वो सरकार का तो 25 किलोमीटर तक के लिए सिर्फ 1200 का। हाँ, सरकार ने तो बोला हुआ है कि 25 किलोमीटर के लिए सिर्फ 1200 रुपए लग सकते हैं। एक फोन आना, मैं आपको फोन करता हूँ मैडम। ठीक सर, ओके। हेलो। हाँ सर एम्बुलेंस सर्विस से बात कर रहे हैं नागपुर से? हाँ। सर एक ऑक्सीजन एम्बुलेंस मिल जाएगी क्या सर? कहाँ से जाना है? सर सोमालवाड़ा से जीएमसी जाना है, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल। ड्रॉप करने का ही बता दीजिए आप, अवेलेबल हो जाएगी क्या गाड़ी सर? हाँ हो जाएगी हो जाएगी। सर प्राइस कितना रहेगा सर? 3000 रुपये लेते हैं ऑक्सीजन वाली गाड़ी का। 3000 टोटल का सर? हाँ। सोमालवाड़ा से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का? हाँ। सर वो कुछ गवर्नमेंट ने प्राइस कम किए हुए ना सर? नहीं, हमको तो ऑक्सीजन देने से मना कर दिया उल्टा। हमको तो ब्लैक में ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है। नहीं, मैं कार्डियक एम्बुलेंस यूज करता हूँ, पार्टीशन वाली। बेसिक वाली यूज नहीं करता हूँ मैं, मेरा बेसिक वाली है ही नहीं गाड़ी। हाँ नहीं बेसिक वाली नहीं सर, ये जो आप बता रहे हैं वो वाली भी, क्योंकि बेसिक वाली का तो और भी कम 650 का प्राइस था। ये कम नहीं हो सकता क्या प्राइस कुछ सर? नहीं मैडम, ये इसका प्राइस इससे ज्यादा, इससे कम नहीं होता है। सर एक ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस चाहिए थी नासिक के लिए, मिल जाएगी क्या? ठीक है, मिल जाएगी। 1500 रुपए चार्जेस होंगे। गवर्नमेंट के प्राइस के हिसाब से तो सिर्फ 1200 ही लगने हैं ना सर? ऑक्सीजन के साथ मैडम बढ़ के आ रहे हैं अभी। तो ऑक्सीजन वगैरह मिला करके 1500 आप बोल रहे हैं? हाँ सर लातूर में ना आनंद नगर से विवेकानंद हॉस्पिटल के लिए एक एम्बुलेंस चाहिए थी, मिल जाएगी क्या ऑक्सीजन वाली? हो मिल जाएगी ना। कितने रुपए लगेंगे सर? मैडम 2000 लगेंगे। वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव। हाँ फिर 2000 लगेंगे मैडम। तो ये थोड़ा कम नहीं हो सकता क्या सर? क्योंकि सरकार ने तो कहा है कि 1200 रुपए लग सकते हैं 25 किलोमीटर के। नहीं, किलोमीटर के हिसाब से नहीं है, वो ड्राइवर 1000 रुपये ले रहा है, वो रिक्स है बोल के। हाँ ठीक है सर, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। Santhia joining us live with more inputs on this. So Santhia, certain rules are there on paper, but on ground what you have found is that these norms are not being followed. Now it is one thing to say that the cases are on a steady rise, therefore there might be a genuine insufficiency of resources, but wherever resources are available, even there what you're showing us is that there's an exploitation. People are being overcharged. Yes, absolutely, Afrida. And in order to stop that from happening, it was last year that Maharashtra government actually issued an order where a capping was put on the prices of private ambulances.
For the basic ones, the price has to be 680 rupees for 25 kilometers. And for an advanced one, which has oxygen and life support in it, for that particular ambulance, the price can be only 1190 rupees for 25 kilometers. And after that, 25 rupees per kilometer. But as you clearly heard that none of these ambulance services were actually adhering to that, with that particular order. Now, in fact, Mirror Now actually called ambulance services in Mumbai, Pune, Nashik, Aurangabad, Amravati, Latur, all these places. These are the worst affected areas in Maharashtra. And as we heard that not only the ambulance services in these cities are overcharging people, Afrida, but in fact they are taking double to 3 times the payment they are supposed to take. In fact, Rajesh Tope, Maharashtra's health minister, has already informed Mirror Now that the order which was issued last year is still very much in existence regarding the capping of prices of ambulances. It is not lifted, but clearly that order in itself is not enough from stopping private ambulances from overcharging people. Afrida. Yes, so Sandhya, what we're trying to do here on the channel is actually to show that yes, there is a crisis on ground, there are genuine shortages, but there should not be wastage, there should not be hoarding, there cannot be black marketing and profiteering at the expense of the patients. Now, who's responsible for doing the checks and balances? It's not simply enough to announce the rules and then nobody is doing the sort of surveillance to check whether the rules are being followed or not. So, Frida, the onus of keeping these private ambulance service providers in check actually is on the district administration. In cities, the municipal corporations have to look after it. In rural parts and other remote areas, the district administration, collector office has to look after it. In fact, last year, when this particular capping was announced, at that time it was also announced that the municipal commissioners and the collectors will have the direct right to actually take over as many vehicles as they want for ambulances. So a lot, on paper at least, was done by Maharashtra government in order to ease the entire ambulance service for the people, make it available for them and make it affordable for them. But clearly the constant checking is not there. That's why there's no fear despite the order saying that there is going to be an action against those who will violate the particular norm. But as I said, the district administration and the municipal corporations are supposed to ensure following of the order, which clearly, at least in these cities, is not happening. Afrida. All right, thanks for joining us, Sandhya, with the latest inputs on this.